is a life story of the patient, because these cardiac drugs may be require maybe 12 to 13 lectures in total, 12 to 13 lectures. So to have the base understanding about these 12 to 13 lectures, we need to understand about the basic cardiac pathologies before we enter into that. Let's talk about the cardiac pathologies first, and then we will talk about the individual drugs as well. So cardiac pathologies में let's say for example life story अगर हम लोग देखें तो by 30 to 40 years of an age, patient who is having some risk factors, let's say for example having obesity, having stress, having family history, having irregular dietary habits, having sleep disturbances, or dietary problems, and maybe job related stress or family related stress, etc., etc. Now by 30 to 40 years of an age, most of the times patient may develop the hypertension, or I can say patient has got borderline hypertension. I'll be quickly running through it because this is a pharmacology series, but I'm not finding it very comfortable before you understand the details about these. So I'll be maybe in 10 minutes I'm going to be covering this, and then we can go to the drugs, so that we can understand where exactly we are treating and why exactly we are taking, because all these drugs I can say are related with each other. We are going to be training you in such a way that these are the weapons to control, treat the cardiac pathologies. और ये सब drugs जो है एक दूसरे में मिले हुए, because one drug can also affect the other pathology. One drug can also rather sometimes increase the other pathology, because cardiac pathologies में let's say for example ischemic heart disease and congestive heart failure दोनों साथ में हैं, so there are certain drugs of ischemic heart disease we cannot give in congestive heart failure. So this has to be understood. These are pathologies are not standalone pathologies, they are interlinked with each other. Rather, this is one pathology can lead to the other pathology. हम लोग अगर if you remember in pathology you must have understood that. So 30s to 40s में क्या होता है, थोड़ा borderline hypertension आ जाता है, थोड़ा पेशेंट डाइट कंट्रोल करता है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन फिर भी हाइपरटेंशन 140/90 से ज्यादा हो गया. So because this patient has got hypertension, what exactly happens in the heart? Let's say this is the right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium. Now because of the patient is going to have more pressure in the arteries, that is called as an hypertension. तो सारे arterial system कहाँ से निकलते हैं? Left ventricle से. This is what is an aorta, and because of this aorta में pressure ज़्यादा है. So think about it, what is going to happen? What is going to happen because of this hypertension? More pressure in the aorta, so left ventricle has to pump more forcibly. Left ventricle को काम, left ventricle has to ultimately overcome what? The arterial pressure. So what will happen? There is something called LVH हो जाएगा, left ventricular hypertrophy हो जाएगा. Left ventricle का muscle mass बढ़ जाएगा. Left ventricle is becoming more strong, rather it is problematic. This is the something. Bicep अगर बढ़ गया तो अच्छा है, लेकिन ये वाला muscle अगर बढ़ गया तो problem है. That I will explain. Or maybe in pathology you must have understood that. तो LVH हो गया, कभी होगा 40s to 50s में LVH हो जाएगा. चलो ठीक है, फिर भी ठीक है, ब्लड प्रेशर का गोली खा रहा है, कंट्रोल में है नहीं है. ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर उसको डायबिटीज भी हो गया तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा. अथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी के अंदर फैटी स्ट्रिक जमा होने के बाद डायमीटर कम हो जाएगा. डायमीटर कम हो गया तो वापस प्रेशर बढ़ जाएगा. तो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल. 50s में क्या होगा अभी, बिकॉज नाउ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरीज जो है, 3 कोरोनरी आर्टरीज जो है उसका भी डायमीटर कम हो जाएगा. ऑन द टॉप ऑफ दैट लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल क्या है, बढ़ गया है, उसको ब्लड सप्लाई क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है. So think about it, what is going to happen? So this is one pathology leading to the other. That is the reason I wanted to take this. क्या कर सकते हैं.
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया तो ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लेकिन कोरोनरी आर्टरीज का डायमीटर जो है कम हो गया, तो सप्लाई कम हो गया. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट इन आवर पैथोलॉजी लेक्चर डिमांड सप्लाई मिसमैच. तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अभी पेशेंट को इश्केमिक हार्ट डिजीज हो जाएगा, which starts with stable angina, unstable angina and all those things. अगर ये भी ट्रीट नहीं हुआ तो 50s के बाद 60s के बाद पेशेंट को इश्केमिक हार्ट डिजीज का हार्ट अटैक हो सकता है, अंजाना पेक्टोरिस हो सकता है. हार्ट अटैक में क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल पेशेंट मस्ट हैव हैड एक हार्ट अटैक, दो हार्ट अटैक, तो कुछ मसल जो है वो नेक्रोज हो जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इतना मसल जो है वो नेक्रोज हो गया. नाउ दिस पेशेंट लैंड्स अप विद अदर रिलीफ फ्रीक्वेंसी. पहले हाइपरटेंशन आया, डायबिटीज थोड़ा ऐड हो गया, अंजाना पेक्टोरिस आया, इश्केमिक हार्ट डिजीज आया. अभी पेशेंट को क्या हो गया, मायोकार्डियल मसल फाइबर्स नेक्रोज हो गया, हार्ट अटैक पेशेंट को हुआ. तो उसके बाद पेशेंट का पंपिंग एक्शन जो है वो फेल हो गया. अभी हार्ट क्या होगा, हाँ अगर वो सर्वाइव हुआ तो फॉर एग्जांपल से समटाइम्स पेशेंट एक हार्ट अटैक, दो हार्ट अटैक में अगर सर्वाइव नहीं हुआ तो फॉरगेट अबाउट इट. अगर सर्वाइव हो गया तो दिस पेशेंट को मायोकार्डियल मसल फाइबर्स वीक होने की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा. हाँ, हाइपरटेंशन, साथ में डायबिटीज, अथेरोस्क्लेरोसिस, इश्केमिक हार्ट डिजीज में अंजाना पेक्टोरिस, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंसमेटल एंजाइना, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स, अक्यूट हार्ट अटैक्स, एक हार्ट अटैक, दो हार्ट अटैक अगर सर्वाइव हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिर कार्डियोमेगाली, एंड दिस पेशेंट लैंड्स अप विद मल्टीपल प्रॉब्लम बाय 70s एंड 60s एंड 70s. बट अभी तक अगर सर्वाइव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फॉरगेट अबाउट इट. सो ये सारे पैथोलॉजीज जो है which I have covered in this 10 minutes are all what, if you can also take the screenshot right now, are all interlinked with each other. This is very important point to understand. These are all interlinked with each other, and drugs also are interlinked. Down the road अभी थोड़ा सा पता चलेगा तुमको. So all these drugs what we are talking about, maybe the anti-anginal drugs, vasodilators, beta blockers, nitrates, potassium channel openers, antiarrhythmic drugs, cardiac glycosides, diuretics also, all these drugs are also interlinked with each other, and because of that we need to understand these pathologies first. कैसे एक दूसरे के साथ ये disorders linked हैं. On the top of that अगर उसको कुछ congenital heart disease है, rheumatic heart disease है तो और complications बढ़ सकते हैं. On the top of that अगर उसको respiratory problem है तो respiratory problem can also complicate to cardiac problems. You must have heard about pulmonale, lungs disorders related to cardiac disorders. ये सारे pathologies जो है are interlinked. Of course, I have covered the cardiac pathologies, which is about 20 lecture series in pathology in maybe 10 minutes, so that we can understand कहाँ पे हम लोग क्या treatment करने वाले and when we can